Let's start from question number 13 now. This is as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Now this is figure is this way. This is say lighthouse 75-meter high. Now he said two ships are on the same side of the lighthouse, one after the other or one behind the other. So but उसने बोला angle of elevation to one ship is 30 degree and another is 45 degree. Now see, जितनी जितनी शिप दूर होती जाएगी सेम चीज़ से जो चीज़ दूर होती जाएगी एंगल छोटा होता जाएगा. डेट्स वाई डी पॉइंट इज़ अवे फ्रॉम दिस बी देन सी. डी सी से ज़्यादा दूर है बी से, सो इसलिए दूर वाले पॉइंट पे छोटा एंगल 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री. Now we have to find out the distance between the two ships, that is CD we have to find out. Now how many right triangles you can see? ABC and ABD. Now in triangle ABC, AB by BC is equal to tan 45 degree. AB we know is 75, BC we don't know, so tan 45 1, so 75 is equal to BC is here, mark it as 1. Now come to in triangle ABD, you can see from the figure also in triangle ABD, AB upon BD. So we have written here AB upon BD is equal to tan 30, AB is 75 and BD we are putting like this BC plus CD की फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा. So BC plus CD is equal to 1 by root 3. Now 75 this way BC we know is 75 वो डाला plus CD is equal to 1 by root 3 because ऐसे दो unknown terms हो जा रही हैं. BC की वैल्यू पुट कर दी. Now CD we have to find out. So CD is what, directly this is cross multiplying, we got this thing. Now finally CD is equal to 75 into root 3 minus 1 into meter. So distance between the two ships is this much. पुट करनी वैल्यू तो 1.732 रूट 3 की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर भी निकाल सकते हो. अदरवाइज यू कैन लीव एज इट इज बिकॉज दिस इज गिवन एज इट इज इन द NCERT. Now come to your question number 14. He said a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Now see, they have made figure also. यहाँ बनाइए. अब girl is standing here with 1.2 meter tall. This girl is standing here. अभी पहले वो जो देख रही थी बेटा तो बैलून को दिस इज 60 डिग्री, एलिवेशन का एंगल इज 60 डिग्री. नो बैलून अब 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब बैलून पीछे गया होगा, दूर हो गया तभी तो एंगल छोटा हुआ. सो नाउ दिस इज गोइंग अवे in a horizontal line. So this time she is looking at the balloon and now angle of elevation is 30 degree. दोनों बार angle of elevation है क्योंकि she is looking at the top, higher than her height. Now see here, this complete height of the balloon from the ground is 88.2 meter. But note one thing, हमारा जो triangle में consider हो रहा है वो portion ऐसे consider हो रहा है, this much and this much. So it means this distance will become what? इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 88.2 में से 1.2 आप माइनस करो तो दिस विल बी 87 मीटर. इट विल बी शोन इन द फिगर हेयर ऑल्सो. नाउ सी हियर फिगर आई मेड लाइक द सेम इन द बुक. सो आई हैव रिटन है दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज था 88.2 बट इतना डिस्टेंस जो है सी डी विल बी वॉट 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर. Now we have to find out the distance covered by the balloon. So ED is the distance covered by the balloon or BC is the distance covered by the balloon. So how many right triangles we can see here? DAC and EAB. Two right triangles. So first of all we have taken distance traveled by balloon. I have written BC. Now in triangle ABE, this triangle we have considered. So EB upon AB is equal to tan 60 degree. So value of EB we know is 87 by AB is equal to tan 60 root 3. So cross multiplying करा, इसको AB उधर लगे इसको नीचे, तो AB is equal to 87 by root 3. You can mark it as 1 also. Now in triangle ACD, you can see that figure also in triangle ACD, that is this triangle we are considering. So again what is this? This upon this. So this is DC upon AC is equal to tan 30. DC again is 87 upon AC is equal to 1 by root 3. AC cross multiply करा तो AC is equal to 87 root 3. Now AC we know and here AB we know. But what is BC? If you see BC is equal to what? AC minus AB. So AC minus AB यहाँ पे values put करी बेटा and taking LCM, so it is 87 root 3 into root 3. It becomes 87 into 3 minus 87 upon LCM is root 3. 87 into 3 minus 87. We got 174 by root 3 and this is rationalize करा इसको
So this is root 3 करा 174 root 3 by 3. Cutting करी 58 root 3 meter is your answer. Now question number 15 and 16 are a little bit different but interesting questions. Now see them. First of all, 15th question. He said a straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower. Approaching means foot of the tower की तरफ जा रही है with a uniform speed, और कार वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Now again you can see पहले 30 degree था, अभी 60 degree है. Now this is shown here. It means this is if tower man is standing here, he is looking or spotting at the car at point D और वो 30 degree पे थी. तो this is depression, ऊपर से नीचे देख रहा है. So actually this angle will be here. This 30 degree angle actually will be here. And then थोड़ी देर बाद 6 seconds बाद जब कार पास में आ गई फुट ऑफ द टॉवर की तरफ क्योंकि अप्रोच कर रही तो इज कमिंग टूवर्ड्स द टॉवर. तो यहाँ पे जब आई बेटा सी पॉइंट पे, नाउ लुकिंग एट द बिलो, तो अभी दिस एंगल जो 60 बनाया एक्चुअली वो ये पूरा एंगल 60 है. तो वही ऑल्टरनेट एंगल दिस बिकम 60. तो यू हैव टू शो दीज टू एंगल्स. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मार्क देम अर्लियर. तो आपको बताया कि पहले 30 डिग्री ये मार्क करो और एक्चुअली वो ये एंगल है. देन 60 डिग्री इज दिस एंगल, एक्चुअली दिस इज शोन हियर. नाउ सी यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टॉवर. सो लेट ए बी इज इक्वल टू एच बी द टॉवर. नाउ according to question AB by BC is equal to tan 60, we can take AB by BC is equal to tan 60. Now AB we have supposed as H, so H upon BC is equal to root 3, so H is equal to BC root 3 and marked it as 1. Now H भी नहीं पता, BC भी नहीं पता, so I have left it here. Now come to triangle. In triangle ABD this time, ABD again what is it? H upon BD. So that is AB upon BD is equal to tan 30. H upon BD is equal to 1 by root 3. H is equal to BD by root 3. अभी बेटा आपको ये बोला कि द हाउ मच टाइम द कार विल टेक दिस, क्योंकि 6 सेकेंड्स में कार D से C पे आ गई. तो ही सेड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर, कि C से B पे जाने पे कितना टाइम लगेगी. अब हमें H की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वी हैव फाउंड आउट H इन द फर्स्ट पार्ट ऑल्सो, H इन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो. बट H निकालने नहीं है तो कैन दिस इज फ्रॉम BD. यहाँ पे BD की जगह हमने BC प्लस CD भी पुट कर दिया अपॉन रूट 3. नाउ फ्रॉम 1 and 2 can we compare H, that is this is equal 1 and 2. can we do like this कि from 1 and 2 this is equal to this, क्योंकि ये भी H की वैल्यू ये भी H की वैल्यू है. तो हमने इनको कंपेयर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस बिकम्स 3BC इज इक्वल टू BC प्लस CD. 3 लाइक टर्म्स इकट्ठी करी, 3BC माइनस BC इज इक्वल टू CD, that is 2BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD by 2. नो BC डिस्टेंस, दिस BC डिस्टेंस इज CD अपॉन 2, दैट इज BC इज हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस. अब क्या है, कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, अगर ये डिस्टेंस वो 6 सेकेंड्स में कवर कर रही है तो नेचुरली BC डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 3 seconds. सो आई हैव रिटन हियर if CD distance is covered in 6 seconds, therefore BC will be covered in 3 seconds because BC is half of CD. I hope you can understand. Now come to question number 16, last question of this exercise. The angle of elevation of the top of a tower. अब angle of elevation की बात कर रहे हैं, नीचे से कहीं ऊपर देख रहे होंगे. Top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with that are complementary. Proved that the height of the tower is 6 meter. Now what is it better? He said there is some tower like this. AB एक tower है और हम 2 points से टॉवर के टॉप पे देख रहे हैं, एलिवेशन का एंगल बना रहे हैं, बट वो एंगल आपको डायरेक्ट नहीं दिए, बट ही सेड कि दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं. तो बेटा वन कैन बी 20, 70, 60, 30, 45, 45, तो कुछ भी हो सकता है. तो हमें तो पता नहीं, तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन वन एज थीटा एंड अदर एज 90 माइनस थीटा. गॉट इट. एक हमने थीटा माना, 90 माइनस थीटा. अगर 90 माइनस थीटा प्लस थीटा का तो आपको 90 रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री. Now here we have to find out H. So I have written let AB is equal to HB tower. Now in triangle ABC, so what do you do? H upon this P upon B. So H upon 4, क्योंकि एक पॉइंट जो था वो 4 मीटर से डिस्टेंस पे था, दूसरा पॉइंट हमने 9 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से डिस्टेंस लिया हुआ. So this is 4 and this complete is 9. So H upon 4 पहले is equal to tan theta, mark it as 1. Now in triangle ABD, this triangle H upon 9 is equal to tan 91 theta. Now third exercise of your 8th chapter. Tan 91 theta is what? Cot theta. So I have written H by 9 is equal to cot theta.
Now see, वी कैन नॉट एलिमिनेट दिस टाइम एच की भैया आप यहाँ से एच की वैल्यू निकालो, यहाँ से निकालो और उनको इक्वेट करो द वे वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. वी हैव नॉट, वी कांट डू लाइक दैट बिकॉज यहाँ पे तो एच चाहिए. तो दैट्स वाई व्हाट वी हैव डन इज मल्टीप्लाई 1 and 2. सो आई हैव मल्टीप्लाइड 1 with 2. Multiply 1 and 2, so h upon 4 into h by 9 is equal to tan theta into cot theta. Since cot theta is 1 upon tan theta, so अगर ये 1 upon tan theta cancel हो गया, this is 1. So h, this is h square upon 36 is equal to 1. H square is equal to 36. H is equal to 6 meter. So that's all of your exercise 9.1 and about chapter 9. Thank you. Have a nice day.